Hello, Namaskar, Vanakkam, Sat Sri Akal, Adab, Salam, Bhai Ka. Today, in this short session, we are going to see the details about the sperm structure. These are the various particular sperms running in the acidic media of vagina to reach the ovum. Let's study the structure of this single particular sperm, also called spermatozoan. All right. Now we'll see the human sperm structure. Human sperm structure. In the human sperm structure, what we have to focus on is the structure. Sperm is also called spermatozoan. Sperm is also called spermatozoan. Spermatozoan. Why it is spermatozoan? Because anything that is zoo, that moves. Okay, so sperm is motile in human males. Okay, let's study the structure of this particular sperm. See, you have the first part. This part is the head. Okay, this part is the head. Head has got such a particular cap-like structure and this particular oval nucleus. This part is the head. ये वाला जो part है पूरा, this one is the head part. Okay, अब इस head part में what you will find is this is the acrosomal cap. Acrosomal cap. Okay, it releases the enzyme HLA, hyaluronidase enzyme. All right, then this one is the nucleus of the sperm. Nucleus of the sperm. Now coming on to the second particular part, which is such a particular structure that is called the neck. This one is the neck. Head, neck. In the neck, you will have a pair of centrioles. So what you'll have is a pair of centrioles at right angle to each other. The first particular one is called the proximal centriole. Proximal centriole, which is going to stimulate the first cleavage of zygote. Stimulate first cleavage of zygote. Zygote का पहला cleavage ये करेगा. Stimulate first cleavage of zygote. Then this one is the distal centriole. The second one is the distal centriole. And this distal centriole gives rise to axial filament. Gives rise to axial filament. Gives rise to axial filament. Clear? Now, ये हो गया नेक वाला पार्ट. हेड में क्या था? न्यूक्लियस था और एक कैप लाइक स्ट्रक्चर था जिसको हमने कहा एक्रोसोमल कैप. और ये एक्रोसोमल कैप क्या रिलीज करेगा? हाइलोयूरोनिडेज एंजाइम रिलीज करेगा. नेक में यू गेट अ पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स, एक प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और एक डिस्टल सेंट्रियोल. प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो है ये स्टिमुलेट करेगा फर्स्ट क्लीवेज ऑफ जाइगोट और डिस्टल सेंट्रियोल जो है ये राइज करेगा एक्सियल फिलामेंट को. अब जो है द नेक्स्ट पर्टिकुलर पार्ट जो आता है, दिस इज द वाइडर पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द स्पर्म. Okay, this is called the middle piece. This is called the middle piece. Middle piece. In the middle piece, you'll find such particular spirally arranged mitochondria. This is the spirally arranged mitochondria. Spirally arranged mitochondria. Spirally arranged mitochondria. And in this spirally arranged mitochondria, this is the respiratory center of sperm with such a particular ring-like structure. ऐसा ring-like structure रहेगा, इसको हम बोलेंगे the respiratory center of sperm. Respiratory center of sperm. Respiratory center of sperm. अब आया ये किसको राइज दे रहा है? ऐसे एक्सियल फिलामेंट को, और ये गया ऐसा एक्सियल फिलामेंट. नाउ आखिरी वाला जो पार्ट है, दिस वन इज द टेल पार्ट. विच पार्ट? टेल पार्ट. अब ये टेल पार्ट में इस तरीके से ऐसा पर्टिकुलर कवरिंग रहेगा, ऐसा पर्टिकुलर कवरिंग रहेगा जिसको हम कहेंगे द साइटोप्लाज्मिक शीट. व्हाट यू विल कॉल इट? दिस वन एज ये वाला जो पूरा लेयर है, दिस लेयर पूरा, इसको विल कॉल इट द साइटोप्लाज्मिक शीट. साइटोप्लाज्मिक शीट. और ये साइटोप्लाज्मिक शीट में यहां पर बीच वाला ये ब्लू में क्या है? दिस वन इज द
एक्सियल फिलामेंट. क्या है? एक्सियल फिलामेंट. और ऐसा एक्सियल फिलामेंट जहां पर साइटोप्लाज्मिक शीथ एब्सेंट है. अगर साइटोप्लाज्मिक शीथ एब्सेंट है तो दैट विल कॉल इट एज एंड पीस. इसको हम नाम देंगे एंड पीस. दिस वन इज द एंड पीस. सो सिंपल है, हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल. इस तरीके का ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है स्पर्म का. एंड स्पर्म के बारे में अगर बोले, दैट मीन्स द स्पर्म के बारे में अगर हम बोले, स्पर्म का काउंट अगर काफी कम रहता है, ओके, तो हम उसको बोलते हैं ओलिगोस्पर्मिया. क्या कहते हैं? ओलिगोस्पर्मिया. ओके, देन जो पर्टिकुलर 3 to 4 ml सीमेन एक इजैकुलेशन में रिलीज होता है. वन इजैकुलेशन में 3 to 4 ml सीमेन रिलीज होता है. उसके अंदर 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स रहते हैं. 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स रहते हैं. एंड यू विल फाइंड दैट द एंटायर पर्टिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म इज कवर्ड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इट इज कवर्ड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अगर हम ये ऊपर के एंटीरियर पार्ट की बात करें तो एंटीरियर कवरिंग दैट इज कॉल्ड, ओके, द गैलिया. एंटीरियर कवरिंग को हम क्या बोलेंगे? गैलिया. एंड द पोस्टेरियर कवरिंग, जो पीछे वाली कवरिंग है, पोस्टेरियर कवरिंग, ओके, इधर पीछे के साइड में जो पूरा कवरिंग रहेगा, दिस पोस्टीरियर कवरिंग इज कॉल्ड द मैनशेट. इट इज कॉल्ड द मैनशेट. ओके, एंड व्हाट इज द वायबिलिटी पीरियड ऑफ स्पर्म? स्पर्म कितने टाइम तक जिंदा रहते हैं? आंसर इज 3 days. कितने? 3 days. दैट मीन्स 72 hours. ऑल राइट, सो दिस वॉज इन शॉर्ट overview of the human sperm structure. Hope you have liked the session. Okay, love you all. Bye bye.